Yes, audible to all. Yes, sir. Yes. So last time we discussed the pictures in PyTest and also the parameterization. So पैरामीटराइजेशन के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास टेस्ट केस का इम्प्लीमेंटेशन सेम रहेगा, इनपुट्स डिफरेंट है, मल्टीपल इनपुट्स के लिए अगर एक ही टेस्ट केस चेक करना है तो पैरामीटराइजेशन का मैं यूज करता हूँ. सो सम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स आर देयर. सो रिमेनिंग पार्ट में क्या कर रहा हूँ सर, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन क्या होगा, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन if I want to skip the test case, ठीक है. समटाइम्स क्या होता है कि कुछ टेस्ट केसेस, फेल टेस्ट केसेस हमें स्किप करनी होती है, और वी कैन से इम्प्लीमेंटेशन अगर रिमेनिंग है, ओके, एंड टेस्ट केस मुझे स्किप करने तो कैसे करेंगे. So there is again the one marker is available. There are total 2 markers that we are using for the skipping purpose. तो मार्कर का नाम होगा pytest dot mark dot skip. अगर ये मार्कर आप एक्टिवेट करोगे तो टेस्ट केस विल स्किप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. फॉर एग्जांपल सर, मेरे पास कितने टेस्ट केसेस है उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट करते हैं. हाउ मेनी टेस्ट केसेस आर देयर? सो ऑल द टेस्ट केसेस वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. कहां पे टेस्ट केसेस? CD PT12. PT12 के अंदर आप जाओगे इनसाइड 5 ऑटोमेशन. क्लियर? pytest -sv. ठीक है. सो दिस आर द वार्निंग्स आल्सो कमिंग. इस वार्निंग को भी हम सॉल्व करेंगे आज, बिकॉज वी नीड टू राइट वन pytest.ini file for this. So these much test cases we are executing. How many test cases? So total 1 test case failed, 14 test cases pass, 13 test warning. Warning in the sense जो हमने कस्टमाइज मार्कर्स लिखे, बिकॉज कस्टमाइज मार्कर्स आर नॉट सपोर्टेड. ठीक है. तो कस्टमाइज मार्कर अगर सपोर्ट करने तो अभी मैं आज मार्कर्स जो कस्टमाइज मार्कर्स लिखेंगे दैट वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई इनसाइड द pytest.ini फाइल. सो इंडस्ट्री में ये फाइल भी प्रेजेंट रहेगी. अगर प्रेजेंट नहीं है तो यू नीड टू राइट दिस फाइल आल्सो. comptest.py फाइल कल ही डिस्कस किया था, and test file you need to write. So these 2 files are very important for the pytest configuration, for the pytest fixture declarations and all things. Okay. So कस्टमाइज मार्कर म्हणजे सर, which one? कस्टमाइज मार्कर. हे आपण कस्टमाइज दिलेत ना, tuple 1, list 1. These are the customized. Already available markers कुठले ते? pytest.mark.parameterize, pytest.mark.fixture. Okay, skip Already available. No? Already available. So total 1 test case is fail, 14 test cases are passed, 13 having the warning. Warning ये इससे ये आ रहा है जो कस्टमाइज है. ओके. सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन सर मुझे कोई भी एक टेस्ट केस फेल करना है. ठीक है. स्किप करना है. तो स्किप तभी किया जाता है अगर आपके पास टेस्ट केसेस इंप्लीमेंटेड नहीं है. इन फ्यूचर देयर इज अ प्लान कि मैं ये टेस्ट केस को इंप्लीमेंट कर सकता हूं, और फेल टेस्ट केसेस है जो मुझे टेस्ट सूट में कंसीडर नहीं करने. सो दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज pytest.mark.skip. So there are 2 skips. The first one is a skip and second one is a pytest.mark.skip. यहां पे आपको कंडीशन देनी होती है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं टेस्ट केस को स्किप करूंगा. बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट स्किपिंग द 1 टेस्ट केस.
सो ड्यूरिंग दी होल एग्जीक्यूशन मुझे एक टेस्ट केस को स्किप करना है। तो आप देख सकते हो टोटल एग्जीक्यूशन 1 टेस्ट केस इज अ फेल, 13 टेस्ट केसेस आर पास, 1 टेस्ट केस इज अ स्किप। कौन सी टेस्ट केस स्किप की है? सो दैट आल्सो यू कैन शोकेस दिस वन, टेस्ट डिक्ट स्किप्ड, अनकंडीशनल स्किप्ड। आप कंडीशन भी दे सकते हो, कंडीशन इन द सेंस जब भी आप स्किप करोगे तो क्यों स्किप करने वाले हो वो टेस्ट केस, उसका भी आप रीजन मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट कीपिंग दिस टेस्ट केस एंड इनसाइड दैट आई हैव यूज द रीजन आल्सो, रीजन skip due to implement। ये टेस्ट केस क्यों स्किप की है उसका भी आप रीजन स्पेसिफाई कर सकते हो, स्किप ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। So whenever you started your automation, whenever you are writing any test cases, तो फर्स्ट हम जो टेस्ट केसेस नॉन टेस्ट केसेस है उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट वन इफ यू फील कि सर इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे मैं इन फ्यूचर करना चाहता हूं, सपोज दिस टेस्ट केस आई वांट टू इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर, बट उसको एग्जीक्यूट करना है, टेस्ट सूट में ऐड करना है, बट इन फ्यूचर आई विल इम्प्लीमेंट द टेस्ट केस। So that time we are using these markers कि आप एग्जीक्यूशन फ्यूचर में कर लो, फॉर द टाइम बीइंग you can skip the test case. Second skip also there, that is based on the condition, based on the condition। अगर कंडीशन ट्रू है then skip the test case। Same instance of skip, I am just writing pytest dot mark dot skip, इसके अंदर कंडीशन देनी है। फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट गिविंग द कंडीशन 10 इक्वल टू 10। अगर ये वैल्यू ट्रू है कंडीशन, देन ओनली वी आर जस्ट कीपिंग द टेस्ट केस, देन ओनली वी आर skipping the test case। See, एरर क्यों आ रहा है, लेट मी चेक। Skip if you need to specify the reason string using the boolean। ओके, रीजन भी देना है क्या? नवीन पार्टेस्ट मध्ये या गोष्टी चेंज झाल्या असतील। ओके, ड्यू टू कंडीशन। स्किप के लिए ओनली रीजन, बट स्किप इफ इज रिक्वायर्ड द कंडीशन एंड रीजन फॉर दैट कंडीशन। एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली रीजन दे सकते हो, बिकॉज रीजन हमेशा देना होता है कि क्यों आप उस टेस्ट केस को स्किप करना चाहते हो। यस, द नेक्स्ट वन, ती जी कंडिशन टाकली आहे 10 इज इक्वल टू 10, ती कशाच्या आधारावर टाकली आहे म्हणजे? So for the time being we have just given this one, okay, but actually ये condition कौन सी condition होती है, that is the one question। See, some of the test cases are dependent, okay, test case 1, test case 2, test case 3, test case 4, ठीक है, कुछ test case डिपेंडेंट है। तो suppose test case 2 is depend on test case 3, अगर टेस्ट केस 2 एग्जीक्यूट हुई है देन ओनली टेस्ट केस 3 एग्जीक्यूट करो, ऐसी जब कंडीशन आती है, सो दैट टाइम वी आर मेंशनिंग दिस टाइप ऑफ कंडीशंस। अभी तो मैंने फॉर द टाइम बीइंग वी हैव गिवन द सैंपल कंडीशन। ठीक है, ओके सर। अशा गोष्टी येणार आहेत की टेस्ट केस 1 जर पास झाली
तरच टेस्ट केस 2 एक्झिक्यूट कर. म्हणजे टेस्ट केस, डिपेंडेंट टेस्ट केसेस. इस केस में हमको ऑर्डरिंग भी लगने वाला है. ऑर्डर कैसे देना है दैट आल्सो वी विल डिस्कस, कि हाउ टू पुट द ऑर्डरिंग इन PyTest. बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि जब कंडीशन ट्रू है देन ओनली वी आर जस्ट कीपिंग द टेस्ट केस. फॉर एग्जांपल मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर रहा हूं, तो नाउ मैंने कंडीशन को फॉल्स कर दिया है. कंडीशन इज अ फॉल्स बट टेस्ट केस इज नॉट स्किपिंग. सी, समझता? यस, ऑडिबल. Audible, sir. Condition Yes, is yes. So based on the condition, you can skip the test cases. These two markers also we are utilizing, skip and skipping. So अभी तक PyTest के हमने इनबिल्ट मार्कर्स देखे थे. इनबिल्ट मार्कर इन द सेंस दिस वन. कौन से देखे थे अभी तक? PyTest डॉट मार्क डॉट फिक्चर, PyTest डॉट मार्क डॉट पैरामीटराइज, PyTest.mark.skip, PyTest.mark.skip. So these are the PyTest inbuilt fixtures. एंड कस्टमाइज फिक्चर्स किसको बोला मैंने कि सर जो मैं मेरे हिसाब से डिफाइन कर रहा हूं. सपोज डिक्ट 1 जो PyTest में प्रेजेंट नहीं है लेकिन मैंने डिफाइन कर दिया. मार्कर म्हणायचं का तुम्हाला? तुम्ही फिक्चर्स म्हणायला लागले. मार्कर हा, नाही फिक्चर म्हणलं मी, तुम्ही कॉन्फेस्ट फाईल मध्ये गेले नाही हिथंच सांगायला लागले म्हणून कन्फ्युज झालो मी परत. नाही, फिक्चर नाही, फिक्चर्स नाही, फिक्चर म्हणत नाहीये. वर्डिंग थोडस हे झालं त्यामुळे. हा, मार्कर म्हणतोय. का म्हणतोय बघा, हे आपल्याला असे वॉर्निंग येत आहेत ना खाली एक्झिक्युशन केल्यावर. मग कस्टमाइज मार्कर वापरता येत नाही का सर? वापरता येतात. आता ते कसे वापरायचे ते सांगतो. ठीक आहे. बरं. हा, सी टेस्ट सेट 3 लाइन नंबर 3, PyTest unknown mark warning. Unknown PyTest mark dot set 1 is a typo. You can register customized marker to these warning for detect. कस्टमाइज मार्कर्स अगर आपको यूटिलाइज करना है तो कस्टमाइज मार्कर्स को हमें रजिस्टर करना होता है. सर रजिस्टर करना है मतलब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आप कस्टमाइज मार्कर्स को रजिस्ट्रेशन करोगे. सो वेयर टू रजिस्टर दिस कस्टमाइज मार्कर? तो PyTest कोई कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रोवाइड करता है. उस फाइल का नाम होगा PyTest डॉट INI फाइल. दिस PyTest डॉट INI फाइल, यहां पे आप जो आपको PyTest के लिए कंसीडर करना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. लाइक फॉर दिस यू कैन रजिस्टर योर कमांड. सर मुझे ये कमांड परफॉर्म करनी है. फॉर दिस टेस्ट सूट यू कैन रजिस्टर योर मार्कर्स कि मैं ये सैंपल मार्कर्स यूटिलाइज करने वाला हूं. Inside this PyTest.ini file, you can also register test files pattern, test cases pattern, test class pattern. कैसे रजिस्टर करना है that also we will discuss. Just give me 1 minute. फिर से चलो. So I will define this file. हमेशा ध्यान में रखना है जहां पे आप टेस्ट केसेस डिफाइन करोगे उसके रूट डायरेक्टरी में ही ये फाइल डिफाइन की जाएगी. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ PyTest डॉट INI. फाइल नाउ सेम as असेल. These two files name always same, comptest.py file and PyTest.ini file. So inside this file you can write your own configuration. सर मैं PyTest यूज करने वाला हूं
अगेन आपको अगर कमांड यूटिलाइज करना है तो कमांड का भी रजिस्ट्रेशन आप करोगे। एडॉप्स बोल के एक वैल्यू रहेगी, उसके लिए कमांड का रजिस्ट्रेशन करोगे कि मैं -sv -html इक्वल टू रिपोर्ट डॉट html यूज करना चाहता हूं, मैं कस्टमाइज मार्कर भी यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम करेंगे मार्कर्स इक्वल टू कस्टमाइज मार्कर्स। सपोज मैंने लिख दिया सेट 1 इज अ कस्टमाइज मार्कर, डिक्शनरी 1 इज अ कस्टमाइज मार्कर, लिस्ट 1 इज अ कस्टमाइज मार्कर, टपल 1 इज अ कस्टमाइज मार्कर. So now I have closed this file. बघा जे कॉन्फिगरेशन आहे ते आपण ऍड करू शकता. तर रन फक्त मी आता PyTest ने करतो. See that warning is not coming because already आपण PyTest ला सांगितलंय की बाबा मी हे मार्कर यूज करणार आहे. समजतं? ऑडिबल? सिंपल. सर ती परत फाईल एकदा उघडा ना, आहे ना फाईल. ही आहे. तर ते अडॉप्ट जे लिहिलंय ना, हे कमांड. अच्छा ती लिहावीच लागते काय? नाही, आता ही का लिहिली बघा. फॉर एक्झाम्पल हे लिहिलंच नाही मी. ठीक आहे. आता रिपोर्ट आपोआप जनरेट केले. ठीक आहे. मी फक्त PyTest म्हटलो. ठीक है. सी इट्स नॉट गोइंग फॉर द डिटेल डिस्क्रिप्शन, इट्स नॉट गोइंग फॉर द लॉग्स, रिपोर्टिंग भी नहीं हो रहा है. अगर आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करते थे? PyTest -sv -html report डॉट html, सो रिपोर्ट विल जनरेट. तो मैं क्या करता था कि सर एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कमांड आई हैव गिवन दिस पैरामीटर्स, I have given these parameters. तो आपका HTML रिपोर्ट भी जनरेट होगा, आपके टेस्ट केसेस के नेम भी आपको दिखेंगे, अगर कुछ लॉग्स है, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट है, वो भी आपको दिखेगा. बट PyTest क्या बोल रहा है? अगर वो आपको कमांड यूटिलाइज नहीं करना है कमांड, तो आप INI फाइल में जाके कमांड भी फिक्स कर सकते हो. आणि फक्त आता मी रन करताना पूर्ण कमांड नाही रन करणार, ओनली PyTest. So internally INI file will consider these a parameter in your command. समजतं आता? पूर्ण PyTestला त्या कमांडने रिप्लेस केलं. फक्त PyTest जरी टाकली नाही. हा, मग ही कमांड काय रिप्लेस झाली? PyTest -sv -html इज इक्वल टू report डॉट html. ठीक आहे. हो सर. आणि मार्कर्स जे माझ्या पूर्ण सूट मध्ये मार्कर असतील ते मी रजिस्टर करून ठेवलेत इथं. सपोज टपल मार्कर मी रजिस्टरच केलं नाहीये, तर PyTest म्हणेल हा मार्कर रजिस्टर नाहीये. बघा रन करतो, यू विल गेट वॉर्निंग की टपल 1 PyTest इज unknown mark warning because this is the customized marker. So customized marker अगर आपको रजिस्टर करना है तो you can register inside pytest.ini file tuple 1. So now I am running the command with the PyTest. अभी मैं PyTest -sv -html इससे रन ही नहीं करने वाला because that configuration I have added inside pytest.ini file. समजतो? ऑडिबल? ऑडिबल. म्हणजे आता आपल्याला 2 फाईल बनवायच्या आहेत. कालची पिक्चरची एक आणि ही INI फाईल आहे. ही फाइल असतेच. ठीक है. जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ऑटोमेशन करने विद द हेल्प ऑफ दिस PyTest, ऑलरेडी ही फाईल लिहिलेली असते. जर लिहिलेली नसेल तर तुम्हाला परत जाऊन ती फाईल राईट करायची.
ठीक है, क्लियर? यस सर. रिपोर्टिंग के लिए ये फाइल्स आपको जब आप होल सूट रन करते हो ना, CI/CD पाइपलाइन, जेनकिन्स और डिफरेंट डिफरेंट CI/CD पाइपलाइन पे, तो दिस फाइल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता मी फक्त पायटेस्ट कमांडनेच रन करतोय, पूर्ण कमांड परत टाइप करत नाहीये. क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट वन, आप जब एग्जीक्यूशन देखोगे, executions are coming based on the test set, test dictionary, test list. So PyTest ने एक कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है कि आपका टेस्ट का फाइल टेस्ट अंडरस्कोर नेम डॉट py से होना चाहिए. सर मला स्वतःच पण ना मी कॉन्फ़िगरेशन करू शकतो. कसं? सपोज मैंने इस फाइल को अगेन वन फाइल क्रिएट कर दी है, जिसको मैंने बोल दिया सेट वन टेस्ट अंडरस्कोर से एंड होना चाहिए. प्रीवियस फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, पायटेस्ट ने प्रेजेंट करके रखी है टेस्ट अंडरस्कोर सेट. आता मी फाइल काय क्रिएट करतोय, सेट वन अंडरस्कोर टेस्ट. सर ही फाइल एक्झिक्यूट होईल का? पायटेस्ट ही फाइल कन्सिडर करेल का? लेट मी राइट one test case inside this file. Def test set one, true दिले फक्त, चला म्हणजे टेस्ट केस पास केली. सो whenever you are executing these test cases, 16 test cases, see, set one test.py, set one test.py. मैंने यही बोला था कि अगर आपको टेस्ट केसेस लिखने तो या तो आप टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो एंड टेस्ट से कर सकते हो. ठीक है, क्लियर? यस, ऑडिबल. सर ती pytest.init फाईल दाखवा ना एकदा वरती एकदम स्टार्टिंगला काय लिहिलंय. हे मी फक्त पायटेस्ट म्हटलोय. ठीक आहे, हा पॅरामीटर पास केला आहे. देन adopts means the command that I need to execute, and markers. Customize ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला करायचे ते या फाईल मध्ये आपण देणार. आपण मी आता नाही का ते ही pytest.ini फाईल बनवायला चालू होतो, तर ते मला ती फाईल बनत नाही, वेगळा सिम्बॉल येतो त्यासमोर, वेगळा सिम्बॉल येतो. स्क्रीन शेअर करा. स्क्रीन शेअर करताय का? हा सर. हॅलो, स्क्रीन दिसते म्हणजे? येस. हे बघा सर, माझी पायटेस्टची फाईल हे असं ते एक्सटेन्शन तुमचं ऑलरेडी ऍड झालेलं आहे, राईट? पण तुम्ही रन करताना ती तसंच रन होणार आहे. ठीक आहे, पण ते जनरेट नाही झालं माझं, हे मार्कर हे नाही गेलं, तो गेला नाही, इक्वल टू नाही. कुठं? त्याच्या खाली टाका त्याला मार्कर्स. अच्छा, इथं टाकायचं. स्पेस आता करा, आणि लिस्ट टाकलेला आहे ना. हो, एकच मार्कर आहे माझ्याकडे सध्याला. ठीक आहे, तरी पण दिसतो तो लिस्ट पायथॉनचा कीवर्ड झाला ना तो. ओके, म्हणजे इथं चेंज करायला लागेल का? तर मी लिस्ट वन केलं त्याला ह्याला, तर तिथे लिस्ट वन लिहिलं की होऊन जाईल. लिस्ट वन लिहा. करा बरं. आता दुसरा ऑप्शन पण मला जो दिसतोय तो अजून पण आहे. पायटेस्ट ऑटोमेशन. ओके, वरती जावा. पायटेस्ट
ऑटोमेशन. ओके. context.py फाईल नाही ना, तिकडे जावा ना तुम्ही टेस्ट केस मध्ये. कुठं टेस्ट केस लिस्ट 1. ओके. एकच मार्कर आहे पायटेस्ट. आणि हा यूज फिक्स वाला आहे. हा, फिक्चरचं नाही आपल्याला काही करायचं. ती फाईलला सेव्ह करून क्लोज. थांबा, पायटेस्ट फाईल मध्ये जाऊ. कुठले हे हा पायथन आय एन वाले. हा हा. मार्कर्स. ओके. सेम नाही, मार्कर म्हटले ना तुम्ही. मार्कर नको, सिंगल मार्कर एस नाही. पाहिजे. एस मार्कर्स हवा म्हणजे मल्टिपल मार्कर असतील. ही सेव्ह करून क्लोज करा आधी. थांबा थांबा. सेव्ह करू. हा, सेव्ह कर. कंट्रोल एस केलं मी त्याला. ठीक आहे. सर हे कसं सेव्ह केलं त्यांनी? कंट्रोल एस. ओके. तरी पण दाखवत आहे. थांबा थांबा, काहीतरी प्रॉब्लेम होतोय. PyTest unknown mark warning, unknown PyTest. This type you can register to avoid. Okay. 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 काय होतंय समजलं. तुम्ही बाहेरून रन करताय ना? अच्छा, ते ह्याच्यात नाही करत तुम्ही पायथन ऑटोमेशन मध्ये मध्ये. जावा बरं. त्याचे कमांड काय? फ्रंट CD बॅकस्लॅश हा, फ्रंट स्लॅश फ्रंट स्लॅश. स्लॅश. नाही, फक्त तुम्ही ते टाईप करा, PyTest CD स्पेस. हा, P कॅपिटल आहे, PyTest आणि टॅब प्रेस करा. टॅब, इट विल ऑटोमॅटिकली टेक. ठीक आहे. एंटर. आता रन करा. हा, तुमच्या केसमध्ये काय झालं होतं, तुम्ही रूट डायरेक्टरी पासून रन करत होते, राईट? ओके ओके ओके. जर हे अवॉइड करायचं असेल, ठीक आहे, परत सीडी करून जायचं नाहीये, त्या फाईल मध्ये जायचं नाहीये. तेच मी आता सांगणार होतो. तिथं काय करा. हा, बिफोर दॅट वन जस्ट राईट डाऊन टेस्ट पाथ इक्वल टू हा आयनाय फाईल. हा, टेस्ट पाथ यस इक्वल टू. हा, तुमची फाईल कुठं स्टोअर आहेत? PyTest ऑटोमेशन. हा, तो पाथ द्या. ऑटोमेशन ए कॅपिटल. आहे. आता तुम्ही बाहेरूनही रन करू शकता, इथूनही रन करू शकता. कारण ही CD मीन्स मैं उस पाथ को लोकेट कर रहा हूं. ठीक आहे. आता मी त्या पाथला लोकेट करत नाही, ती कॉन्फिगरेशन मी ऑलरेडी ऍड केलं. ठीक आहे. चलो. ओके, लेट मी शेअर द स्क्रीन. स्टॉप करतो स्क्रिप्ट शेअर करतो. ठीक है. सो दिस PyTest.ini फाइल. सो जैसे मैंने बोल दिया कि सर आई वांट टू कंसीडर द पाथ. सो ऑलरेडी अभी तो मैंने फॉर द टाइम बिंग 5 ऑटोमेशन PT12 लिखा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, इंडस्ट्री में ऑल द टेस्ट केसेस आपके टेस्ट डायरेक्टरी में ही प्रेजेंट रहेंगे. So test path always consider the test directory. ठीक है. So that test path also you can pass. File Python files कौन से consider करने, that also you can pass. Here I am just passing ये Python file, इस particular PyTest के लिए Python underscore files मुझे test underscore star means all .py से कंसिडर करने. अगेन सर मुझे डिफरेंट से भी कंसिडर करना है, स्टार्ट टेस्ट.py अशा फाईल मी कंसिडर करू शकतो. सो फॉर द टाइम बिंग द सेम फाइल्स आय हॅव रिटन. अशी पण कंडिशन येऊ शकते की सर मला फाईलचं पॅटर्न चेंज करायचंय.
फाईल पॅटर्न पण टेस्ट सोबतच हवा. आता फॉर एक्झाम्पल मी अशी फाईल लिहायचा ट्राय करतो, सॅम्पल टेस्ट स्टेप अप. ह्याच्यात पण टेस्ट केसेस देऊया. या 3 टेस्ट केसेस, 2 टेस्ट केसेस आहेत. हे ट्राय करतोय, आपल्याला हे ट्राय करायचंय. हा, सो टोटल दिस मेनी टेस्ट केसेस आर देअर. पाय टेस्ट इम्पोर्ट नाही केलं तुम्ही? पाय टेस्ट इम्पोर्ट नाही केलं का तिकडं? हा, नाही, पाय टेस्ट आता सध्या आपण फक्त पाय टेस्ट डिफाईन केलंय. ठीक आहे, मार्कर यूज करायचंय तर इम्पोर्ट करावं लागेल. क्लिअर? and I am just running this type of test cases. Total 17 test cases. But this file is not considering. सर स्क्रीनवरच हे काढा ना, मीटिंगचं काय म्हणतात त्याला. आता ओके. सो मैंने इस फाइल को ऐसे डिफाइन कर दिया, सैंपल टेस्ट स्टेप अप. सर मुझे ये भी पैटर्न कंसीडर करना है. आई विल ट्राई स्टार टेस्ट अंडरस्कोर स्टार डॉट पीवाय. आपण म्हणतो की पायटेस्ट हे सपोर्ट करतंय का ते बघूया. सही, मैंने कस्टमाइज फाइल बनाई, उसका पैटर्न मैंने मेंशन कर दिया कि यू कैन कंसीडर आल्सो दीज टाइप ऑफ फाइल्स. सो ते पैटर्न मी पायथॉन फाइल मध्ये प्रोवाइड केलं. समजतं? यस. अगर आपने पैटर्न प्रोवाइड नहीं किया है कि सर मैं फाइल ऐसे नहीं लिखूंगा, ये पैटर्न इज नॉट प्रोवाइडेड, देन दैट फाइल विल नॉट कंसीडर. बिकॉज पाइटेस्ट क्या बोल रहा है, मैं बस वही फाइल कंसीडर करूंगा जो टेस्ट से स्टार्ट होगी, और ऐसी फाइल जो टेस्ट से एंड होगी. स्टार म्हणजे ऑल, म्हणजे काही असू शकतं. .py ओनली दैट फाइल विल कंसीडर. बट मैंने क्या कर दिया कि सर उस पाइटेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया. सो नाउ ओनली 1 and 16, टोटल 17 टेस्ट केसेस आर कंसिडर. बट जो हमने कस्टमाइज फाइल बनाई है सैंपल टेस्ट अंडरस्कोर स्टेप, दिस फाइल इज नॉट कंसिडरिंग. इस फाइल को भी पाइटेस्ट को कंसिडर करवाना है, तो मैं पैटर्न लिख दूंगा, जैसे मेरी फाइल है वैसे पैटर्न लिखूंगा, स्टार अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्टार. शेवटी काही असू शकतं, असं नाहीये की ये सैंपल टेस्ट स्टेपच असेल. सो नाउ दैट फाइल ऑल्सो कंसिडर. तो मैं पाइटेस्ट को मेरा खुद का कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं कि यू नीड टू कंसिडर दीज टाइप ऑफ फाइल्स. कौन सी पाइथन डायरेक्टरी आपको कंसीडर करना है, उस डायरेक्टरी को भी आप देख सकते हो. यहाँ पे टेस्ट पाथ एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यू कैन कंसीडर ऐसी फाइल जो टेस्ट से स्टार्ट, टेस्ट पाथ. सो पाइथन फाइल आपको ये कंसीडर करनी है, टेस्ट पाथ ये कंसीडर करनी है. ऑटोमेशन में यही पाथ यूज करने वाले. देन अगेन फंक्शन, पाइथन के फंक्शन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, पाइथन के फंक्शन वही कंसीडर करो जो टेस्ट अंडरस्कोर से है एंड स्टार. आता उद्या उठून म्हटले की सर माझ्याकडे ही टेस्ट केस लिस्टची टेस्ट केस आहे, तिचं नाव असं नाही आहे, तिचं नाव असं आहे अंडरस्कोर से. List length test. So I'm just checking this configuration. List गेला रे, टेस्ट वाली आली का इथं? नाही ना. दिस लिस्ट डायरेक्ट येते का ते चेक करायचं आपल्याला. ही टेस्ट केस कन्सिडर झाली का नाही. तो पायटेस्ट काय म्हणते की तुमचं कस्टमाइज टेस्ट केसेस टेस्टने स्टार्ट व्हायला हव्या. तर तुम्ही म्हटले की सर माझे फंक्शन
टेस्टने पण एंड होऊ शकतात, तर ते कॉन्फिगरेशन तुम्हाला इथं द्यायचंय. अंडरस्कोर स्टार अंडरस्कोर टेस्ट से भी एंड हो सकता है मेरा फंक्शन. So now we have defined these test case. So total 17 and 1, 18 was there, but अभी फिर से रन कर रहा हूं 1 and 18, 19. So now that test case also consider. आपण आपल्यानुसार कॉन्फिगरेशन सेट करू शकतो. इज दॅट क्लिअर? पण अगदी तर पाथ आणि ते नव्हता दिला सर तुम्ही, तरी पण त्या कन्सिडर ते पायटेसने ऑलरेडी दिलेल्या गोष्टी आहेत ना. मी फर्स्ट सेशनला तेच म्हटलं, रूल जे पायटेसने ऑलरेडी डिफाईन केलेले आहेत, रूल हे वाले. तर हे फर्स्ट सेशन मॉड्यूल इन पायटेस असं हवं, फंक्शन असे हवेत. हे प्री डिफाईन पायटेसने रूल डिफाईन करून ठेवले. हा, आता मी ते रूल्सला चेंज करायचा ट्राय करतोय पायटेस डॉट INI मध्ये जाऊन. समजतं? ओके सर. ठीक है. सो दिस इज द INI फाइल. सी INI फाइल क्यों बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए, ऑल द कैंडिडेट्स को. व्हाट इज द कंटेंट ऑफ INI फाइल ये पता होना चाहिए, बिकॉज मार्कर्स आप INI फाइल में लिखोगे. हाउ टू डिफाइन द पायटेस फाइल, how to define the test cases, that also you are going to write inside the INI file. How to run the test suite, that also you have defined inside INI file. समजतं? ऑडिबल? म्हणजे आपण जर त्या रूलनीच फाईल दिल्या तरी त्याला याची गरज नाहीये ते पाथ वगैरे, पण जर बदलणार असू तरच. हा, बदलणार असू तर लिहायचे. ओके, ठीक आहे. म्हणजे इन शॉर्ट आपण एखाद्याचा नवीन प्रोजेक्ट पाहिला तर पहिला जाऊन INI फाईल बघायला लागेल, म्हणजे त्यात काय काय मेन्शन आहे, मग त्याच्या अकॉर्डिंगली आता कसं होणार आहे, आता कसं असेल, हे काय होतं, फर्स्ट थिंग ही फाइल का सांगतो त्याचा मिनिंग पण. ठीक है. जब आप इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो आपको वहां पे जाके कोई पाइटेस्ट नहीं पढ़ाने वाला है ना. दे विल आस्क यू, बिकॉज उनको पता है यू आर द ऑटोमेशन इंजीनियर एंड यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द ऑटोमेशन. ठीक है. सपोज XYZ इंजीनियर ने इंडस्ट्री ज्वाइन की है, सपोज 4 years ऑफ एक्सपीरियंस और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. जिसका पाइटेस्ट में एक्सपीरियंस है उसने डायरेक्टली इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली नो. तो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि कैन यू रन दिस पाइटेस, कैन यू राइट द टेस्ट केसेस. फर्स्ट आपको फर्स्ट टास्क यही दिया जाता है कि दिस फ्रेमवर्क इज इंप्लीमेंटेड, अंडरस्टैंड दैट फ्रेमवर्क. तो वहां पे आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सी फाइल लिखी है, कैसे लिखी है, कौन सा मार्कर्स है, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन, फ्रेमवर्क में कौन सी फाइल है, टेस्ट फाइल कौन सी कंसीडर होगी, मार्कर्स कौन से होंगे, तो सिंपल जाके आपको pytest.ini फाइल ओपन करनी होती है. ही फाइल पाहिल्यावर तुम्हाला सर्व गोष्टी समजतात की रन कसं करतात. तुमचा जो सूट आहे, कारण नवीन माणूस येऊन या मी लिहिलेल्या टेस्ट केसेस नाही समजू शकत, कुठं काय लिहिलंय, कुठल्या टेस्ट केसेसचा मिनिंग काय, कुठली टेस्ट केस कशी लिहिलेली आहे, फाईलचं नाव काय, पॅटर्न्स काय आहेत, मार्कर काय. नो. pytest.ini फाइल का बेनिफिट भी यही है. अभी तो टेस्ट केसेस मैंने लिखे, चलो ठीक है, सो आई नो कि ये मार्कर्स है. कल को जाके आप डायरेक्टली टीम ज्वाइन करोगे और आपको बोला गया कि कैन यू रन द सैनिटी सूट, तो आप ऑल द फाइल्स में जाके सैनिटी का मार्कर सर्च करते हो. इट विल टेक द टाइम. अभी तो आपके पास ओनली 6 फाइल्स है, बट इंडस्ट्री में नियर अबाउट मोर देन 20-30 फाइल्स रहेंगे. तो 30 फाइल विजिट करोगे, हर एक मार्कर देखोगे, फिर मार्कर्स को रन करते हो. इंस्टेंस ऑफ दैट यू कैन डायरेक्टली विजिट दिस pytest.ini फाइल. आप सैनिटी मार्कर है, यस, वो मार्कर को पिक करोगे एंड pytest -m सैनिटी, सिंपल. तर ही फाइल इंपॉर्टंट असते.
स्टँडर्ड फ्रेमवर्क जेव्हा डेव्हलप केले जातात ना, तेव्हा pytest.ini फाईल comtest.py फाईल तुम्हाला दिसणार आहे. समजतं? आता प्रॅक्टिस साठी, ट्रेनिंग साठी नाही सांगत आहे मी, इंडस्ट्रियल यूज साठी सांगतोय. ठीक, क्लिअर? यस, ऑडिबल? यस. ठीक है. सो पैकेजेस इंस्टॉल, कौन से पैकेजेस आपको यूटिलाइज करने, तो इंडस्ट्री में ये भी फाइल होती, कौन सी रे, रिक्वायरमेंट .txt. इस फाइल के अंदर ऑल दी पैकेजेस कौन से आपको इंस्टॉल करने हैं वो मेंशन किया जाता है. ऑल, चलो उसको भी हम डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ ऑटोमेशन. बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड pytest.ini फाइल हैविंग द कमांड कि आप टेस्ट केस कैसे रन करोगे, मार्कर्स कौन से आप डिफाइन करोगे, पाइथन फाइल के पैटर्न्स क्या रहेंगे, पाइथन फाइल के फंक्शंस क्या रहेंगे, पैटर्न्स आप डिफाइन करने वाले. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन, जब मैंने टेस्ट केसेस रन की, सो ये फाइल तो मैंने क्रिएट करके रखी है. सो नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनी वॉर्निंग. कस्टमाइज मार्कर्स आपण लिहिले की तिकडं जाऊन रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. कुठं? pytest.ini फाइल मध्ये. चलो. So for these test cases, sir, for these test cases, now I am defining the order for the test cases. Suppose मुझे टेस्ट 1 लिस्ट को एग्जीक्यूट करना है, देन टेस्ट 2 डिक्शनरी को एग्जीक्यूट करना है, टेस्ट फाइल ऑर्डर पण आपण डिफाइन करतोय डायरेक्टली कस्टमाइज. असं फाइल ऑर्डर हवं की एक्झिक्युशन असंच व्हायला हवं. ही शेवटी घेऊया. ही फाइल सर एक्झिक्यूट करताना, कारण हे पायटेस्ट ऑलरेडी प्रोव्हाइड करतं की ज्या ऑर्डरने, अल्फाबेटिकल ऑर्डरने तुम्ही फाइल लिहिणार आहे त्याच ऑर्डरने एक्झिक्यूट होईल. टेस्ट 1, टेस्ट 2 असा. ठीक है. चलो. सो whenever you are running these files, so these are the test cases. कि सेट 1 में ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगी, देन दिस टेस्ट केस, देन सेट 1 के टेस्ट केसेस, देन टेस्ट 1 लिस्ट के टेस्ट केसेस, देन डिक्शनरी एंड दिस. अगर आपको हो टेस्ट केसेस के ऑर्डर डिफाइन करना है ना, तो pytest also provide the order feature. You can provide the order to the pytest test cases. आता pytest नुसारच तो ऑर्डर घेतोय. कस्टमाइज ऑर्डर द्यायची असेल की फर्स्ट टेस्ट केस ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए, सेकंड टेस्ट केस वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए. तो ऑर्डरिंग के लिए pytest क्या बोल रहा है कि यू नीड टू इंस्टॉल वन प्लगइन. दैट प्लगइन इज नथिंग बट pytest-order plugin. So once you install this plugin, तो आपके पास एक मार्कर रहेगा, उस मार्कर के बेसिस पे आप टेस्ट केसेस को ऑर्डर दे सकते हो. कौन सा मार्कर? pytest.mark.order. in that, this is the first test case. Then in that is the second test case. First, second, third, fourth. So first of all, you need to install this pytest order. Sir, install कैसे करना है? pip install pytest order. So first of all, we'll go to the official website pytest order. मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों जा रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन दिए. यू नीड टू इंस्टॉल दिस pip install pytest order. आता इंस्टॉल आहे का बघू शकता. pip list, inside that you can check pytest order, pytest html आहे, pytest है, metadata है. तो डायरेक्टली आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो. So for that purpose, you need to install pytest.order. So this installation will start. These are the plugins. Now you can check pytest list.
हा पायटेस्ट ऑर्डर नाव इन्स्टॉल्ड. सर पायटेस्ट ऑर्डर इन्स्टॉल झाल्यावर टेस्ट केसेसला तुम्ही ऑर्डरिंग करू शकता. सपोज लिस्टच्या टेस्ट केसेसला मला ऑर्डरिंग करायचंय. टेस्ट लिस्ट सम फर्स्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए. तो पायटेस्ट डॉट मार्क डॉट ऑर्डर 1. पहले ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर दो, उसके बाद ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर दो, देन you can go for the other orders also. 3, 4. Now based on this order only my test cases will execute in list. See, list के टेस्ट केसेस दिखाता हूं. लिस्ट के टेस्ट केसेस देखना है ना ओनली, तो मैं ऐसे रन कर दूं क्या, पायटेस्ट हाइफन लिस्ट 1. टेस्ट लेंथ आता तिकडच्या पण येत आहेत का, कारण एक्स्ट्रा मध्ये डिफाईन केले आहेत. आपण ह्या फाईलची ऑर्डरिंग बघूया. फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट सम विल एक्झिक्यूट, देन लिस्ट लेंथ टेस्ट केस विल एक्झिक्यूट, सेकंड ऑर्डर. थर्ड ऑर्डर टेस्ट लिस्ट लास्ट एलिमेंट रिमूव विल एक्झिक्यूट. फोर्थ ऑर्डर टेस्ट चेक लिस्ट विल एक्झिक्यूट. आणि हे का आलेत, कारण लिस्ट एक्स्ट्रा मध्ये तो मार्कर आपण दिलेला आहे, हा वाला. समजतं? ऑडिबल? येस येस सर. ठीक आहे. सो ऑर्डरिंग ऑल्सो यू कॅन प्रोव्हाइड. सर ऑर्डर कशी घेतली इकडे डाउनलोड करून तुम्ही? पायटेस्ट ऑर्डर पीप इन्स्टॉल पायटेस्ट ऑर्डर. अरे जसे HTML इन्स्टॉल केलं ना, हे प्लगइन का सांगतोय, कारण हे प्लगइन आपल्याला लागणार आहे. पहिला आपण HTML रिपोर्टिंग साठी पहिलं प्लगइन इन्स्टॉल केलं, नाही नंतर आपण अल्युअर प्लगइन साठी इन्स्टॉल केलं, नंतर ऑर्डरिंग साठी हे प्लगइन इन्स्टॉल केलं. ठीक आहे, अजून एक प्लगइन इन्स्टॉल करणार. सो right now I am just running the test cases. Sir, these are the test cases and these test cases are executing. Total 19 test cases. These are there. Real time scenario industry में ये scenario आने ही वाला है. Sir, suppose I have the 500 test cases. Execution will take the time. Yes, 500 टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करायचे. आता आपण फक्त पायथॉनचे लिहिलेत म्हणून, पुढे जाऊन एपीआय यूआयच्या टेस्ट केसेस असतील तो एग्जीक्यूशन विल टेक टाइम. इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए पायटेस्ट क्या बोलता है कि यू कैन यूटिलाइज पैरेलल एग्जीक्यूशन. पैरेलल एग्जीक्यूशन, पैरेलल एग्जीक्यूशन म्हणजे काय? टेस्टिंग बैकग्राउंड से अगर हो तो आपको पता होगा, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग. देयर इज वन मैनुअल टर्मिनोलॉजी, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग. एट अ टाइम आई कैन ओपन द मल्टीपल टेस्ट केसेस ऑन 2 डिफरेंट ब्राउजर. सपोज 500 टेस्ट केसेस एक ही ब्राउजर पे रन करना है, तो इट विल टेक टाइम. अगर मैंने क्रोम के 2 इंस्टेंस ओपन किए हैं एंड 250 डिवाइड कर दिया, हे डिवाइड पायटेस्ट ऑटोमॅटिक करतो की किती टेस्ट केसेस मला एका ब्राउजरला रन करायचे आहेत, किती एका ब्राउजरला रन करायचे. सो पैरेलल एग्जीक्यूशन क्या बोलता है कि आप पैरेलली टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल 19 टेस्ट केसेस है, तो 19 टेस्ट केसेस हैविंग द सीक्वेंस टेस्ट केस नंबर 1 2 3 4 5 6 अशा 19 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होते. मुझे अभी उसका टाइम भी रिड्यूस करना है, पैरेलल एग्जीक्यूशन करना है. तो इस 19 टेस्ट केसेस को पायटेस्ट, आपको अगर चाहिए सर मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, तो आप कर सकते हो. दे विल पिक. सर मुझे 19 टेस्ट केसेस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है.
So at a time, 4 co-workers will work. At a time, 4 co-workers PyTest रन कर सकता है. आपल्या मशीनला PyTest 4 डिफरंट सीपीयू मध्ये डिवाइड करतो व्हर्च्युअल सीपीयूज मध्ये. हा, आता मी फक्त PyTest असं रन करून एग्जीक्यूशन करतोय. PyTest सर मुझे को-वर्कर्स में डिवाइड करना है, तो PyTest क्या बोल रहा है, यू नीड टू इंस्टॉल वन प्लगइन. दैट प्लगइन इज नथिंग बट PyTest -x. So this plugin, with the help of this plugin, you can do the parallel execution. PyTest -x. हे प्लगइन आपल्याला इन्स्टॉल करायचं. कसं, परत सेम PyTest pip इंस्टॉल PyTest XDisk, तो इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया. हे प्लगइन इंस्टॉल करायला हवे तरच बाकीच्या गोष्टी होतील. सर मी फक्त आता असं रन करतोय PyTest, सो क्या हो रहा है, ऑल द टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटिंग, बट आई वांट टू डिवाइड दिस 19 टेस्ट केसेस इन 2 co-workers. तो आप कमांड लिखोगे PyTest -n नंबर ऑफ co-workers 2 स्पेस देके. So all the test cases divided into 2 co-workers. See, execution time will reduce. आधी 1.13 असा काहीतरी येत होता, आता 0.19 सेकंड. बिकॉज PyTest क्या बोल रहा है, देखो इंटरनली जब आप इसका एग्जीक्यूशन देखोगे, सो वी हैव स्टार्टेड 2 वर्कर्स फॉर 19 एटम्स. लोड शेड्यूलिंग GW1, 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 GW1. पैरेलली ते को-वर्कर्स रन करता है. अगेन, आपके अगर टेस्ट केसेस डिपेंडेंट नहीं है तो आप मल्टीपल को-वर्कर्स रन कर सकते हो. मल्टीपल को-वर्कर्स. सर मुझे यही टेस्ट केसेस ऐसे रन करना है, PyTest -n 5 को-वर्कर्स में, टोटल 5 को-वर्कर्स. अगर आपने को-वर्कर्स नहीं दिए है सर, PyTest नहीं दिए, ऑटोमेटिकली को-वर्कर्स पिक करता है PyTest. क्यों नहीं पिक किया, लेट मी चेक. PyTest -namespace, हाँ, PyTest -n एटो. उसको चाहिए उतने को-वर्कर्स, वो पिक करेगा. 4 को-वर्कर्स. फोर्सफुली अगर आपको देना है कि 2 को-वर्कर्स पे मुझे टेस्ट केस एग्जीक्यूशन करना है, सो दैट्स फाइन. प्रीवियसली क्या होता था, PyTest में ये फीचर नहीं था. सो देयर इज वन कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को बोला जाता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टी थ्रेडिंग. इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, सो यू नो द मल्टी थ्रेडिंग. प्रोग्राम्स को 2 थ्रेड में डिवाइड करते जाते हैं. So at a time, parallelly, I can run the 2 programs in one CPU. But PyTest ने क्या बोला, मल्टी थ्रेडिंग आप यूज ही मत करो. I have XDisk प्लगइन, इसको इंस्टॉल कर दो, रन करोगे PyTest. कितने को-वर्कर चाहिए, -n 2 चाहिए तो 2 से. हे को-वर्कर्स तेव्हा युटिलाइज होतील जेव्हा आपल्याकडे मल्टिपल टेस्ट केसेस असतील. आता तर 19 टेस्ट केसेस आहे, दॅट्स फाईन. 100-200 टेस्ट केसेस असतील तर एक्झिक्युशनला टाइम जातो. तो टाइम रिड्यूस करण्यासाठी पॅरलल एक्झिक्युशनचा यूज होतो. सर, समजतं? 19 PyTest आहे, त्याचे ग्रुपिंग कसे केले, समजा 2 भागात डिवाइड केले तर ते त्यांनी. ऍटो करतोय. ओके, ठीक आहे. आणि GW3 GW1 म्हणजे ते ग्रुप त्यांनी जेवढे हे co-workers. वापरले. GW1, GW2, GW3, GW4 यांनी काय केलं, 19 टेस्ट केसेसला 4 मध्ये डिवाइड केला.
ओके. ठीक आहे. असं पण डिवाइड करू शकतात, किंवा ते ऑटोमॅटिकली काय करतात, याच्यावर 5 रन करतायत, याच्यावर 3 रन करतात, याच्यावर 2, किती झाले, आणि याच्यावर 9. पण एक्झिक्युशन टाइम, एनी हाऊ एक्झिक्युशन टाइम रिड्यूस होणारच आहे ना, पॅरलली त्या गोष्टी चालणार आहेत आपल्या मशीन मध्ये. म्हणजे टाइम रिड्यूस करण्यासाठी आपण ही कन्सेप्ट वापरतोय हो. कोवर्करची. नेक्स्ट कन्सेप्ट, सर ड्युरिंग दिस वन, ड्युरिंग एक्झिक्युशन, आता मी ही कन्सेप्ट नेक्स्ट लेवलला नेतो. काही टेस्ट केसेस फेल करतोय, ही टेस्ट केस नॉट इक्वल टू, ही टेस्ट केस अशी, टेस्ट 1 equal to 5. So these are the test cases that are going to fail during the execution. आता फेलिंगचे पॅरामीटर्स बघूया. PyTest. So 4 test cases are failing. One by one execution देखोगे. So this is my execution. First test case is failed. Then this will start. Then this will start. Then this will start. तो पहिली टेस्ट केस फेल केली का आपण टेस्ट लिस्ट मधली, टेस्ट लिस्ट सम ऑफ लिस्ट चालते, पहिली केली तरी चालेल, नाही पहिली केली तर टेस्ट सम लिस्ट कुठली वाली येते रे. सर तिला ऑर्डर 1 दिलते म्हणून मे बी ती पहिली हा आली. पहिली आली आहे. ऑर्डर चेंज करतो 1. आपल्याला एक्झिक्युशन बघायचे आता 2. ठीक आहे. सो इट विल कम्स टू द सेकंड टेस्ट केस. So one parameter that we are going to utilize for the failing test cases, सिचुएशन आ सकती है, देयर इज अ चांसेस, आपको बोला जा सकता है कि अगर आपकी टेस्ट केस फेल हो गई, नो नीड टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट टेस्ट केसेस, नो. इफ एनी टेस्ट केस इज फेल, यू नीड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन. सो दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज one parameter that is already available inside the PyTest. उस पैरामीटर को बोलेंगे hyphen max fail equal to 1. इसका मीनिंग क्या है कि 1 टेस्ट केस अगर फेल है तो एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दो. ऑल द एग्जीक्यूशन मुझे एग्जीक्यूट नहीं करने, तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, PyTest hyphen max fail इक्वल टू 1. पहिली टेस्ट केस फेल झाली की स्टॉप, नेक्स्ट टेस्ट केस एक्झिक्यूट करायची नाही. समजतं अडेबल. जोपर्यंत आपली फर्स्ट फेल होत नाही तोपर्यंत ते एक्झिक्यूट होणार. फर्स्ट नाही, मी सॅम्पलला फर्स्ट म्हटलो. ठीक आहे. हा मी असं जर म्हटलो, हा एक मिनिट, मी असं म्हटलो PyTest hyphen max fail इक्वल टू 2. सो जब तक आपके 2 टेस्ट केस फेल नहीं होंगे तब तक एग्जीक्यूशन रखना है. अगर 2 टेस्ट केसेस फेल है तो एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है. ओके. फर्स्ट टेस्ट केस फेल, नो वरीज, मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा. यहां पे सेकंड टेस्ट केस फेल हो गई है, सो आई विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन. क्लियर. सो क्या लिखोगे, हाइफन मैक्स फेल की मैक्सिमम फेल्यूर कितने होने चाहिए आपके टेस्ट सूट में, बिकॉज दिस मैक्स फेल विल डिसाइड योर परसेंटेज की टेस्ट सूट एग्जीक्यूशन परसेंटेज. समजतं. हा, या मॅक्स फेलला ऑप्शन आहेत. कुठले ऑप्शन आहेत, 2 ऑप्शन असतात जे PyTest मध्ये अवेलेबल आहेत. PyTest डॉट एग्जिट आप डायरेक्टली कर सकते हो, एंड PyTest डॉट फेल. ठीक है. चलो, सो इसको भी अंडरस्टैंड करते कैसे करना. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग. जब भी आप टेस्ट केसेस लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट इनसाइड द पाइथन की स्टैंडर्ड यूटिलाइज करोगे, बट मेक श्योर टेस्ट केसेस के अंदर, ठीक है, रियल टाइम सिनेरियो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में हमने फेस किया है. टेस्ट केसेस के अंदर नो नीड टू राइट
एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखोगे तो टेस्ट केस पास हो जाता है यार, बिकॉज एक्सेप्शन क्या करता है, असर्शन एरर हैंडल करता है। एंड पाइटेस्ट के टेस्ट केसेस फेल मींस असर्शन एरर आएगा तभी फेल होते हैं, बट आवर पाइथन के एक्सेप्शन इसको हैंडल कर लेता है। सपोज टेस्ट सम लिस्ट, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सर आई हैव रिटर्न टेस्ट सम लिस्ट, आई हैव रिटर्न ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन, असर्शन एरर आला तरी चालेल, मी डायरेक्ट मेन एक्सेप्शन घेतो ऍज ई प्रिंट ई। सेकंड टेस्ट केस आपली फेल होत होती आधी बघा, आता मी काय करतो, सर टेस्ट केस रन करतो, टेस्ट सम फेल ड्यू टू नंबर ऑफ लिस्ट, बट आपको रिजल्ट क्या दिख रहा है, पास। बट एक्चुअली लॉजिकली जब बात होगी तो ये टेस्ट केस तो आपकी फेल होनी चाहिए, ऐसा नो ऑडिबल। Yes, sir. येस. but you are handling the assertion error. So assertion error अगर आप हैंडल कर रहे हो तो हमेशा assertion error आने के बाद आपको फोर्सफुली टेस्ट केस को फेल करना होता है। कोई भी टेस्ट केस अगर फोर्सफुली आप फेल करना चाहते हो तो आप यूज करोगे pytest dot fail assertion error. So this function is already present. कौन सा फंक्शन रहे, pytest डॉट फेल। मी फक्त हे म्हणत नाही की असर्शन मध्येच लिहा, नाही, इफ एल्स कंडीशन अगर आप डाल रहे हो तो इफ एल्स में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेवल इफ एल्स में भी आप इसको फेल कर सकते हो, ऐसे अभी टेस्ट केस तो फेल होनी चाहिए। नाउ द सेकंड टेस्ट केस इज फेल। हे मी फक्त आता फीचर इंट्रोड्यूस करतो, जे रिमेनिंग फीचर आहेत ना आपले आपण यूज करतो इंडस्ट्रीला, ती pytest डॉट फेल। पण तिथे आपण तर ते हे वापरलं होतं ना सर, ट्राय वालं, हो तरी पण फेल झालं. हा, आता मी इथं फोर्सफुली फेल करतोय ना, ओके. याचं एक्झिक्युशन काय होईल रे, लाईन नंबर दिस, एक्झिक्युशन ऑफ दिस, सर इट इज गोज टू द ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में जाएगा तो यहाँ पे असर्शन एरर आएगा, असर्शन एरर इन द सेंस लाइन नंबर 15 विल एग्जीक्यूट, लाइन नंबर 16 विल एग्जीक्यूट। लाइन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि मैं इस टेस्ट केस को फोर्सफुली फेल करने वाला हूं। दोन हे असतात, फेल किंवा एक्झिट एक असतो। एक्झिट मीन्स exit also there, pytest dot exit, exit means आप टेस्ट केस के बाहर आ जाओ टेस्ट एग्जीक्यूशन से, इट विल गोज फॉर स्टॉप द टेस्ट एग्जीक्यूशन and this test fail, pytest dot fail will fail the test case। मी फेलने रन केला तर मला नेक्स्ट टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट होत आहेत, पण मी आता फेलने रन करतच नाही, एक्झिटने रन करतो। आणि ह्या गोष्टी आपल्याला ऑटोमेशन मध्ये यूज करायच्या आहेत, तर मी हे पायटेस्टचे आजपर्यंत जेवढ्याही गोष्टी सांगितल्या आहेत ते ऑटोमेशन मध्ये आपण यूज करणार। बघा टेस्ट सम, अरे ये तो फेल हो गया सर, यहां से तो बाहर। एग्जिट मीन्स जहां पे टेस्ट केस फेल वहां से बाहर आ जाओ, नो नीड टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट टेस्ट सूट, नो नीड टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट टेस्ट सूट। समजतं, ऑडिबल? ते स्ट्रिंग मध्ये लिहायचं होतं ना एक्झिस्टच्या, तुम्ही ई लिहिलाय. ई म्हणजे स्ट्रिंगच झाले ना, ही लाईन बघा, ओके. एक्सेप्ट एक्सेप्शन ऍज ई एंड ये बघा, ठीक है, क्लियर?
सो दिस इज नथिंग बट अ पार्टेज जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है. दिस फीचर्स, ऑल द फीचर्स वी आर गोइंग टू यूज इनसाइड दी ऑटोमेशन. अजून एक फीचर असतं कोड कव्हरेज. सर मैंने तो टेस्ट केसेस लिख दिए, नंबर ऑफ लाइंस लिख दिए, ऑल ऑल पाइथन फाइल मैंने लिख के रखा है. बट जितने भी लाइंस ऑफ कोड मैंने टेस्ट केसेस में लिखे हैं, टेस्ट सूट में लिखा है, मेरी होल डायरेक्टरी में लिखा है, टेस्ट मॉड्यूल में लिखा है, क्या वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, तो उसका परसेंटेज मैं कोड कवरेज से चेक करता हूं. कोड कवरेज, पाइटेस का कोड कवरेज के लिए पाइटेस एक मॉडल प्रोवाइड करता है, पाइटेस कवरेज. दिस प्लगइन इज प्रेजेंट. सर इस प्लगइन को आप इन्स्टॉल करोगे. हे जेवढेही प्लगइन सांगतोय ना, या प्लगइन आपल्याला इंटरव्ह्यू साठी पण इम्पॉर्टंट असतात. They will ask you what are the models, what are the plugins you have installed during your automation project. हे प्लगइन इन्स्टॉल करायला हवं. तर आपल्याला सर कुठला तरी कोड कव्हरेज बघायचा आहे. तो मॉड्यूल नेम यू कॅन प्रोव्हाइड ऐसे पायटेस्ट हायपन कवरेज इक्वल टू, सर मुझे है ना टेस्ट वन, टेस्ट अंडरस्कोर वन लिस्ट मॉड्यूल नेम प्रोव्हाइड केलाय. ही फेल होत आहे ना, लेट मी चेक. फेल केलेली आपण, त्याच्यासाठी त्या गोष्टी अशा होत आहेत. आपल्याला फेल नाही करायची, तिथं स्टॉप होत आहे. चला, कोड कव्हरेज ऑफ धिस मॉड्यूल कसं करायचं. पायटेस्ट हायपन मैं बोल रहा हूँ टेस्ट टेस्ट लिस्ट वन लिस्ट डॉट पीवा. कोड कवरेज नहीं आया क्या? लेट मी चेक. No data was collected. No data was collected. Coverage warning. Module 1 has never imported. मॉड्यूल डिफाइन करताय ना आपल्याला, मॉड्यूल 1 मध्ये नाही डिफाइन करायचंय. रिपोर्ट, एकच मिनिट, रिपोर्ट घेऊया. कव्हरेज असं काहीतरी असतं रे. रिपोर्ट इक्वल टू टर्मिनल as was never imported. Module test 1 was not ever imported. Module not imported. इम्पोर्ट करायचं तर नाहीच आहे आपल्याला, डायरेक्ट रन करायचे आहेत. नो डेटा टू रिपोर्ट. रिपोर्ट काय येत नाही. लेट मी चेक अगेन. ऑफिशियल वेबसाइटला चेक करतो हाउ वी दे आर रनिंग. नो, ये तो होता ही है, बट पाथ, आई थिंक पाथ वी हैव नॉट सेट. Context test support detail coverage context. We have the full test name included the parameterization. Coverage run hyphen PyTest. You will significantly see the PyTest. Install केला. Okay. So hyphen okay. So modules चेक करत नाहीये, आपल्या स्पेसिफिक प्रोजेक्टचं चेक करतोय, किंवा त्या फाईलचा पाथ आपल्याला द्यायचा आहे. चलो तर फाईलचा पाथ देऊया. फाइव ऑटोमेशन PT 12. Code coverage warning. Let me read this one first.
डिसेबल करायचंय का वॉर्निंगला? नो सोर्स फाईल. ओके. यू कॅन ऍड कॉन्फिगरेशन सेटिंग टू अवॉइड रन. ओके, होईल तो. काहीतरी आपण रन करताना मिस्टेक करत असणार. कोड कवरेज मुझे चाहिए एनी हाउ. पीटी. ओके, दिस वन पाइटेक्स के अंदर सैंपल टेस्ट भी नहीं रन हो रहा है. Then this one also not running. Let me run this document. PyTest hyphen hyphen my project. So that is our project, and inside that test directory we don't have any test directory. So कसं रन करायचं? Bio underscore automation underscore BT12 स्पेस देके मैंने मेरी फाइल का नाम दिया है टेस्ट लिस्ट 1. कवरेज प्लेटफॉर्म फाइनल. ओके, कहाँ पे तो आ नहीं रहा है, कुछ तो मिस्टेक होता है. यूजर दिस पैकेज. ओके, पाथ 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 पाथ. नो आई गॉट इट. पाथ कुछ तो मैच नहीं हो रहा है. लीप साइड पैकेजेस कोड कवरेज यहां से रन हो रहा है, एंड मॉड्यूल वाज नेवर इंपोर्टेड. लेट मी सर्च दिस एरर. नो, हेच कमांड असते पण का होत नाहीये, काहीतरी मिस्टेक होत आहे. रिपोर्ट HTML, ये कोड कवरेज का भी रिपोर्ट चाहिए हमें. नो, अरे यार, हैंग हो गया क्या? ओके, चलो इसको नेक्स्ट सेशन में मैं बोलता हूँ. बट यहाँ पे कुछ तो पाथ सेट करके कोड कवरेज देख सकते हैं. प्रिव्हियस बॅचेसला कसं केलं होतं रे, काही आठवतंय का? PT 11 आहेत कोणी? येस. राहिलं होतं सर हे काय राहिलेलं आहे. झालं नाही तुमच्या बॅचला कोड कवरेज? नाही. कुछ तो आउटपुट में हाइपन वीवी शो. ओके, लेफ्ट कंटेन एरर कुछ तो में फेल टू जनरेट द रिपोर्ट, नो डेटा टू रिपोर्ट. डेटा टू रिपोर्ट यहां से यूजर ऐप लोकल ये वाला एंड कोड कवरेज सीधा. नेवर imported module not imported. See this. Okay, no worries, we'll check in next session. Okay, at the time of automation. Okay, so PyTest में क्या क्या चीजें डिस्कस की है? So this whatever we discussed till the date, these all the things are very important. PyTest install कैसे करना है, installations. कोडिंगचं हे लिहा ना, पीप इन्स्टॉल ते लिहायचं राहिलंय सगळ्यात खाली जिथं आपण कोडिंग घेतलं आज. कुठला? आजचा हा शेवट, एकदम शेवट. हा इथे येते हा पीप. ना, हा, पीप इन्स्टॉल हे कोड कवरेज साठी. ठीक आहे. हा, कोड कवरेज. ते प्लगइन कसं घ्यायचं त्याचा हाँ, ये पार्ट. प्लगइन इसको मैं ट्राई करता हूँ आज. ओके, बट ये इंस्टॉल होने के बाद आपको कवरेज दिखाता है कि आपका कोड
किस लेवल पे कवर हुआ है, कैसे हुआ है। अगर आपको इसको ऑफिशियली देखना है ना, सो सी कितने स्टेटमेंट है, मिसिंग कवरेज कितना है ड्यूरिंग द योर एग्जीक्यूशन। इनसाइड दिस प्रोजेक्ट देर आर टोटल 95 स्टेटमेंट इन द सेंस पाइथन कोड, उसमें से कितने आपने टेस्ट केस में मिस किए हैं, कितना % आपने कवर किया है। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरा एक टेबल आता है। इस टेबल को HTML रिपोर्ट में भी आप जनरेट करते हो, कोड कवरेज रिपोर्ट इक्वल टू HTML लिख के, तो डायरेक्टली योर code coverage also generated. Okay, so this is for today's session. So from Monday, not on Monday, 16, no, from 17 we'll start with the UI automation. ठीक है, so make sure अभी तक जितना भी हुआ है पाइथन साइड, PyTest साइड, एडवांस पाइथन, बेसिक पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटा टाइप्स, व्हाटएवर we discuss, okay, and PyTest, उसका रिवीजन कंप्लीट करना है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी तक हमने यूटिलाइज किया है वही सेम कंसेप्ट्स हम ऑटोमेशन में यूटिलाइज करेंगे। ऑटोमेशन फर्स्ट समझेंगे कि प्लेराइट कैसे इंप्लीमेंट करना है, प्लेराइट का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, सेलेनियम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, सेलेनियम का यूज कैसे करना है, ठीक है, और पाइटेस्ट का यूज कैसे करना है। फॉर ऑल द एग्जीक्यूशन they are going to use this whole syllabus. अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए 35 लेक्चर्स, these lectures are very important for the automation purpose. ठीक है, क्लियर? यस, मंथन। सर नेक्स्ट वीक पासून संध्याकाळी पण असणार आहे का क्लास? तुम्ही मेसेज टाकला होता ना की 17 पासून संध्याकाळी